अगला क्वेश्चन है हमारा, considering the following statement, under the UN Charter, the General Assembly may take up in issue relating to maintenance of international peace and security, including principle governing disarmaments and the regulation of armaments. ठीक है, तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो उसका है कि ये वाली बात भी ठीक है। द यूएन चार्टर सिक्योरिटी काउंसिल हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो 1 and 2 दोनों बातें इसकी ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका सी। The maintenance of international peace and security is the primary responsibility of the Security Council. Security Council. The Security Council cannot effectively ensure the peace and security because the member state of their own. तो इसका आंसर क्या है? A is true but R is false. A is true but R is false. तो इसका आंसर क्या है? C. UN Secretary General is appointed by General Assembly. General Assembly upon the recommendation of Security Council. तो इसका आंसर है C. Which one of the following UN organ can take the enforcement action in a threat of the peace or breach of peace? तो इसका आंसर है आपका D, सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका आंसर क्या है? D. The UN General Assembly has a power to authorize UN peacekeeping operations. The General Assembly represents the entire membership of United Nations. तो इसका आंसर है both A and R true, but R is not a correct explanation of A. तो B है इसका आंसर। Which one of the following organ of UN has the power to initiate study and make recommendation for the purpose of encouraging progressive development of international law and its codification? तो इसका आंसर है आपका द जनरल असेंबली। द इंटरनेशनल लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा एस्टैब्लिश करी गई थी? आपका जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 1947। तो इसका आंसर है ए, था सी। इसका विच वन ऑफ इज नॉट द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। तो इकोनॉमिकल एंड सोशल फंक्शन का इसका आंसर क्या नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो सी है। मैच द लिस्ट एंड करेक्ट आंसर, मैच द लिस्ट करनी है। तो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ है आपका? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो इसका है आपका हेग में। ठीक है, तो 4 है हेग। द यूनाइटेड नेशन का कहाँ पर है आपका? द यूनाइटेड नेशन का है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, और आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है? इसका है आपका रोम में। और इसका कहाँ है? इंटरनेशनल एटॉमिक IAEA का कहाँ है? इसका आपका वियना में। ठीक है, 4 3 2 सॉरी 1 4 3 1 2। तो ये काम रहेगा 4 3 1 2 डी में। The Security Council, which function continuously and adopt its own rule of procedure, has its seal at New York. न्यूयॉर्क होना था, ये न्यूयॉर्क हो गया। ठीक है, तो इसका है आपका आंसर both the suit of convenience security council meet at many places। तो इसका आंसर ये तो नहीं है, दोनों में से तो कोई नहीं है। तो इसका आंसर है सी। A is true but R is false। तो इसका आंसर है सी। मेक अ लिस्ट व्हेन करेक्ट द सेलेक्ट आंसर द यूजिंग द कोड ऑफ बिलो। तो इसका है आपका डी है। ठीक है, तो डी में क्या है? यूटिलाइजेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। ये कहाँ बात करी है? पैंथम ने। किसने करी है? पैंथम ने करी है इसकी बात। सोशल यूटिलिटेरियन की बात किसने करी है? आपका ये बात करी है कॉम्पेट ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पेट ने कही है। साइंटिफिक पॉजिटिविज्म की बात किसने कही है? आपका ये बात करी है इरिंग ने। ठीक है, इरिंग ने। और सोशल इंजीनियरिंग की बात किसने करी है? पाउंड ने। ठीक है, तो इसका आंसर है टी। इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। What is the principle of contemporary index of international criminal courts? It means ICC will only prosecute an individual if state are unwilling to unable to prosecute। क्या ICC है वो prosecute करेगी an individual के ऊपर state are unwilling, state जो वो unwilling है, unable to prosecute। तो इसका आंसर है D। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 4 of UN Charter provides that the membership of the United Nations is open to peace loving state which accept are able to willing to carry out the obligation of character। तो इसका आंसर है A। If there is any threat or to international peace and security, the Security Council is empowered to take enforcement action। Which one of the following character of UN character? तो इसका आंसर D। 7। When the Security Council is exercising respect of any dispute or situation
of the function assigning to it in the present charter the General Assembly. तो जनरल असेंबली ऐसे में क्या करेगी, shall not make any recommendation with regard to dispute or situation unless the Security Council so request. तो इसका आंसर है A. आर्टिकल 94 यूनाइटेड नेशन चार्टर्स प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, ये तो प्रोवाइड करता नहीं है, प्रोवाइड करता है आपका if any party to case fails to perform its obligation under the judgment, the other party may have recourse to Security Council which may decided upon the measure to be taken given effect the judgment. उसका आंसर है C. The International Court of Justice does not have any compulsory jurisdiction over all the international dispute between states. State enjoys sovereignty in international relations. तो इसका आंसर है आपका A is false but R is true. The answer is T. Which one of the following is not the principal power and function of General Assembly? तो इसका आंसर है the consideration of information as to no self-governing territories. तो इसका आंसर है D. Intervention of by the third state in proceeding already instituted by court ICJ may occur in two circumstances. Which one of the following states article ICJ statute deals with the same? तो इसका आंसर है आपका आर्टिकल 62 and 63 P. S का आंसर. Article 24 of the UN Charter authorizes the Security Council to constitute UN peacekeeping force as anti-escalative device. Reason: the principle of non-intervention as investigating by the UN Charter is one of the main purpose or principle of UN nation. तो इसका आंसर है क्या है, तो इसका आंसर है आपका D. A is false but R is true. तो इसका आंसर है D. The budget of ICJ approved by जनरल असेंबली, इसका बजट जो होता है वो आपका ICJ करते, तो C है इसका आंसर. How the judges of International Court of Justice are elected? They are elected the Security Council on the recommendation of the Security Council simultaneously. तो इसका आंसर है आपका A. Which of the following will settle the issue of event of dispute as whether the International Court of Justice has jurisdiction? तो इसका आंसर है आपका the court itself. तो इसका आंसर क्या है D. Which of the following is among the purpose of United Nations as laid down in Article 1 of UN Charter? तो इसका आंसर है 1, 2 and 4. तो 1 बात करता है तो international peace and security to develop friendly relation among nations to achieve the international cohesion in solving international problems. Of an economic social culture and maintaining character. तो इसका आंसर है आपका 1, 2 and 4. तो इसका आंसर है C. Decision of General Assembly on the important question shall be made by 2/3 majority present on voting. तो इसका आंसर है D. The voting purpose procedure in the Security Council for the admission of a member of United Nations is by an affirmative vote of 9 members including concurring votes of a permanent member. So इसका आंसर है क्या C. Important है, नोट कर लेना. Consider the following statement about the military staff committee. तो इसका आंसर है it shall advise and assist the Security Council on all questions relating to military requirements for maintenance and international peace and security. It shall consist of chief of staff, the permanent members and the 2 non-members nominated by the General Assembly. तो इसका आंसर है आपका 1 is correct, only 1 is correct. तो इसका आंसर है C है इसका आंसर. अगला क्वेश्चन है हमारा कि consider the following statement. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon is the first legal binding international agreement to the comprehensive prohibit nuclear weapon. It was passed as July 7, 2017 by the Security Council. It has come into force. तो इससे रिलेटेड बात क्या है, only 1 and 3 correct. ठीक है, तो 1 and 3 are correct. तो D है इसका आंसर. Which of the following is a all mechanism of a pacific settlement of dispute under UN Charter? तो इसका आंसर है आपका इंक्वायरी, जुडिशियल सेटलमेंट, आर्बिट्रेशन यानी कि D. Which one of the following is a host is allowed under Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961? तो इसका आंसर है the host nation at any time and for the any reason
can declare a particular members of diplomatic staff of mission to be persona non grata. तो इसका आंसर है ए. The admission of any peace-loving state to membership of the UN will be affected by decision of General Assembly on the recommendation of Security Council. तो इसका आंसर है डी. Which one of the following organs of UN has a power to suspend or expel a member of United Nations? तो इसका आंसर है जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. तो इसका आंसर है टी. The General Assembly is one of the principal organ of United Nations which consists of all members of United Nations. The resolution or the declaration of General Assembly are not being binding upon the state, they are merely recommendations. तो इसका आंसर है आपका both A and R are correct. R is R individual, but R is not a correct explanation of it. तो B है इसका आंसर. In which case the essential elements of international custom opino juris clarified. इसका आंसर है आपका SS Lotus case PCIJ 29. इसका आंसर है A. Decision on procedure matter in a security council are to be made affirmative vote of 9 members including permanent members. Considering the following statement, the jurisdiction of international court this is compulsory in all cases referred to the court by Secretary General. इसमें हमें मार्क करने हैं आपके सिर्फ करेक्ट. तो इसका आंसर है 2 और 3. रेफर टू बाय द कोर्ट बाय स्टेट पार्टीज एंड डिस्प्यूट अंडर द ऑप्शनल केस. तो 2 and 3 आंसर कहाँ है बी में. Which following statement is correct? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? The decision of the International Court of Justice shall not have a binding force except upon the parties to the dispute and only in respect of particular dispute between them. तो इसका आंसर क्या है सी. The General Assembly of the United Nations passed Uniting for Peace Resolution on 30 November 1950. तो इसका आंसर है डी. Article 26 of ICJ statute provides for the formation of the composition of 5 judges at the request of the parties of the dispute. The procedure was adopted for the first time in the case of केस में बताया गया था निकारागुआ. तो इसका आंसर है बी. The judgment of International Court of Justice is to be signed by किसने करा था आपका? तो ये होता है बाय द प्रेसिडेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट. तो ए है इसका आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो. द रूल ऑफ एक्सट्राडिशन दैट द रिक्वेस्टिंग स्टेट इज अंडर द ड्यूटी नॉट टू ट्राई और पनिश द ऑफेंडर फॉर एनी अदर ऑफेंस दैट व्हिच ही वाज एक्सट्राडिटेड इज नोन एज अ. तो इसे हम क्या कहते हैं आपका रूल ऑफ स्पेशलिटी. तो इसका आंसर है बी. द यूनो हैज बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरवेनिंग इन द मैटर व्हिच आर एसेंशियली विद दैट डन इन जुडिक्शन ऑफ एनी स्टेट yet the तो उसका आंसर है स्टेट काउंसिल कैन इंटरवीन व्हेन इट डिसाइड एंड इन्फोर्स एक्शन. तो उसका आंसर है ए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन. ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है यूनाइटेड नेशन का? तो उसका आंसर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थ्रू द वर्ल्ड. तो उसका आंसर है सी. द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस प्रोवाइडेड इन द यूएन चार्टर इज सब्जेक्ट ऑफ जजमेंट ऑफ द आंसर क्या है इसका? सिक्योरिटी काउंसिल. तो उसका आंसर है बी. In case of abstention of permanent members of a security council from voting, the security council का क्या है? Still remain valid. तो इसका आंसर है B. A judge of International Court of Justice can be dismissed by the anonymously open of the other judges. तो इसका आंसर है C. Which one of the following statement is wrong? इसमें कौन से in respect of the particular judgment given by the International Court of Justice. तो इसमें कौन सी बात गलत है आपका? इफ अ कंट्री इज नॉट अ पार्टी ऑफ द केस. तो ये वाली बात है डी. ठीक है, तो डी है इसका आंसर. आई होप आपको वीडियो पसंद है. वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो.